आएंगे आज के दिन में रात को 10 बजे और इनको बढ़िया अभिनंदन देना चाहता हूं। बहुत अच्छी नौजवान खिलाड़ी है। अंडरआर्म दुनिया के लिए पहली बार यहां पर फरूक कुंटुपनी तैयार है। पहली गेंद और इस गेंद लेग स्टंप के बाहर थे। आज के दिन में भी वाइड में शुरुआती किया है, 3 दिन में भी वाइड में शुरुआती किया गए थे जो इस मुन्ना फाइटर्स के, इस मुन्ना फ्रेंड्स के जो तरफ से पेश किया गया इस श्रृंखला में। अब अगली गेंद फरूक अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार हैं और इस गेंद रियाज के लिए। रियाज इस गेंद को खिलना चाहते थे, गेंद में आती कुचाल मिले थे, यहां पर खतरा हो सकती थी, बाल बच गई तो लेग बाई के इशारा देना होगा। जी हाँ, जो इन्होंने स्वीप शॉट के लिए क्रॉस के लिए खड़े हुए थे, जो अंतिम क्षण में उछाल अधिक मिले हैं, गेंद बिल्कुल ऊपर की तरफ बाउंस की तरफ आए और खेलने में प्रयास किए हैं लेकिन बल्ले पर नहीं लगे। एक गेंद में अब 2 रन बटोर लिया गया है। बहुत खूबसूरत मैच के शुरुआत है। एक तरफ से ग्लैडिएटर, दूसरी तरफ से यूनाइटेड अमिगोस यूनाइटेड, बहुत अच्छी टीम है। एक उपला इलाके की है और एक व्हाट्सएप ग्रुप की है जो अंडरआर्म बेल्ट ग्रुप की। और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है मिड ऑन पर, 1 रन मिल जाएंगे। यहाँ पर फील्डर थी, इन्होंने गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, उठाए तो रोके, तब तक दोनों एक बल्लेबाज ने जो खाता खोल चुके हैं। बहुत खूबसूरत मैच की शुरुआत है। 2 गेंद में 3 रन जोड़ा गया है। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है रियाज गोरी, बहुत प्रमुख खिलाड़ी है दक्षिण कन्नड़ा की। और इस गेंद में खेलना चाहते थे अपील, लेकिन इस अपील को इंकार किया गया है। लेकिन लेग बाई के इशारा, लगातार दूसरी लेग बाई इस ओवर में, 3 एक्स्ट्रा अब तक जोड़ा गया है। 1 रन एकमात्र रन बनाए हैं शमशीर, कुल मिलाकर है 4 रन। ये बहुत बढ़िया जो अब पहली ओवर है जो सिर्फ 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 2 लेग बाई 1 वाइड और 1 सिंगल। यहां पर अब अगली गेंद फरूक अराउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। शमशीर इस गेंद को हल्के से कट कर दिया गया है। गली इलाके पर गेंद गया, वहां पर फील्डर थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाई सादिक ने, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं फरूक, इनके सामने है लाजवाब खिलाड़ी है दक्षिण कन्नड़ा के रियाज गोरी, इनके सामने है फरूक अराउंड द विकेट। अगली गेंद और इस गेंद को खेला गया है मिड विकेट इलाके पर, फील्डर मौजूद थी, इन्होंने हल्के से चकमा खाए, तब तक नासर अरिमला ने गेंद को उठाए। आजकल के जो अरिमला इलाके की ट्रेंड है, जो चम्मू अरिमला जो दुबई में बैठकर यूट्यूब में अगर देखता होगा तो इनके घर के खिलाड़ी जो नासर अरिमला को देखता होगा। बहुत खूबसूरत जो प्रतियोगिता है यूट्यूब में लाइव दे रही है, सीधा प्रसारण दे रही है, दूर दूर इलाके में, दुनिया के कोने कोने में बैठकर देख रही है। अब अगली गेंद फरूक टू शमशीर, बहुत खूबसूरती के साथ खिलाड़ी के इस्तेमाल किए, एक हाथ पर गेंद को उठाना चाहते थे, तब तक दूसरे रन के लिए लेकिन मना किया गया है रियाज। अंतिम क्षण पर यहाँ पर ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 7 रन है और 7 रन में यहाँ पर जो 3 रन अतिरिक्त के खाते पर जोड़ा गया है और 4 रन जो बल्लेबाजों के खाते पर जोड़ा गया है। और इस बीच में ओवर की विश्लेषता कहो तो 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 5 रन और कोई विकेट नहीं, 2 रन लगवाई के रूप में गए थे। उस वजह से जो टीम के खाते पर जोड़ा जाती है, एक्स्ट्रा के खाते पर जोड़ा जाती है और उस वजह से गेंदबाज ने 5 रन खर्च किया गया है पहली ओवर में। बहुत खूबसूरत ओवर। Girl, I can feel it coming in the air tonight and it feels alright. My baby keep moving. बॉलर ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന ജേഴ്സി നമ്പർ കാണാമായിരുന്നു। सदिक पेरला इनको लाया गया है गेंदबाजी के मोर्चा संभालने के लिए। सदिक पेरला पूरी तरह बदल चुके हैं मेरे ख्याल में, जो शक्ल में पहचान ही नहीं मिलते। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं और गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, बहुत खूबसूरत गेंद थी और अंपायर ने घूमकर देख रही है लेकिन कुछ नहीं इशारा किया। बहुत खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे, जो खड़े खड़े खेलना चाहते थे। शमशीर ने बल्ला घुमाकर कट करना चाहते थे जो तैडमन इलाके पर, लेकिन गेंद तेज थे, रफ्तार थे और गति भी बहुत अच्छे थे। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है अराउंड द विकेट और शमशीर के लिए, शमशीर ने इस गेंद को भी हो बढ़िया गेंद। सदिक पेरला
इनके गेंद 2 बार पराजित हुए। शमशेद ने लेफ्ट हैंडर है, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को रखते हैं, दूर इलाके में रखते हैं, तब बल्ले पहुंच नहीं पाते हैं। ये इनके जो पराजित हुए होने में जो सफल हुए। बहुत खूबसूरत गेंद का ना होगा। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। अरुण विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए जो सिद्दीक परला तीसरी बार है इस ओवर में। राइट आर्म अरुण विकेट। शमशेद इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेग के काफी बाहर। इस बार अंपायर ने घूमकर देख रहे हैं, एक्सरसाइज चालू किए इनके, जो वाइड के इशारा किया गया है। पहली वाइड है इस इनिंग्स में, जी हाँ पहली वाइड है जो सिद्दीक परला की तरफ से आए, और इस एक वाइड की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन। पहली रन इस ओवर के। 2 गेंद पराजित हुए थे, तीसरी गेंद फेंकना चाहते थे, तब वाइड के इशारा किए। अब अगली गेंद राइट आर्म ऑन द विकेट, और गेंद शमशेद बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाएं के इस्तेमाल किए। फील्डर तेजी के साथ पीछे की तरफ दौड़ रही है, दूसरी रन के लिए दौड़ा गया है और 2 रन भी पूरा किया गया है। बहुत खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर रियाज के ऊपर जो थ्रो किया गया है तो रियाज के लिए निशाना किया गया है फील्डर ने, लेकिन जल्दबाजी में गेंद जो भीमर की तरफ, जो गेंदबाज के सर के ऊपर से थ्रो गए, उस वजह से मेरे ख्याल में तो रियाज को पहुंचने में आसानी के साथ जो अवसर में मिले, रन संख्या कुल मिलाकर डबल अंक पर आनी 10 रन। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है सिद्दीक परला। 3 गेंदें फेंक चुके हैं और इस गेंद हो बढ़िया गेंद। यहां पर विकेट कीपर की गलती के वजह से मेरे ख्याल में जी नहीं, बल्ले के बारी किनारा लगे, बल्ले के बारी किनारा लगे थे, इस वजह से जो 1 रन शमशेद के खाते पर जोड़ा गया है। लेकिन विकेट कीपर के जो हाथ पर लगकर जो वापस गए थे पिच की तरफ, और 1 रन तेज रफ्तार से दौड़ा गए थे। अब पहली बार रियाज को इनको सामना करना पड़ा है सिद्दीक परला को। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है, और इस गेंद बहुत खूबसूरत शॉट लंगन के ऊपर से चमत्कार, ये है गोरी सिक्सर। और इस प्रतियोगिता में तीसरी छक्का थे। कल के दिन में नौफल जोड़ कर लगाए थे, परसों के दिन में शमीर बाबा लगाए थे, आज के दिन में गोरी ने शुरुआत की है यहां पर रियाज गोरी। बहुत अच्छी शॉट, और इस गेंद लक्ष्म के काफी बाहर, तप्पा खाने के बाद जो विकेट कीपर के ग्लव्स पर मौजूद। और इसी के साथ ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या कुल मिलाकर मजबूती स्थिति बना ली है मेरे ख्याल में। यानी प्लेटफॉर्म अच्छे हुए तो यानी पावर प्ले में अगर 2 ओवर में 15 के अगर ऊपर आ जाए तो, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसानी के साथ खेलने के लिए मौका मिलती है। यहां पर मौका बना लिए। पहली ओवर हल्के से दबाव दिख रही थी, 7 रन थी, और दूसरी ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी की, 1 छक्का और 1 डबल, 1 सिंगल और 1 वाइड। बहुत खूबसूरत ओवर रहा। आखिरी ओवर के भी सिलेस्ता है कि 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 11 रन और कोई विकेट नहीं, दोनों बल्लेबाज सही सलामत। और उन्हीं कृष्णन गेंदबाजी करने के लिए खुद आए हैं, कप्तान हैं। इनके सामने है शमशेद, दोनों गोरी के प्लेयर हैं अब मैदान पर। और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ में जगह बनाए हैं। 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन मना किया शमशेद ने, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन, क्षमा कीजिए दूसरी ओवर में 10 रन प्राप्त किया हुए थे। जो 1 ओवर कोई मेडल नहीं, कोई विकेट नहीं, 10 रन थे। उन्हीं कृष्णन, रियाज गोरी, दोनों गोरी यंग बॉयज के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं। जो केरला की है उन्हीं कृष्णन, कर्नाटक की है रियाज गोरी। और देशी और रोमिंग के बीच में लड़ाई है। ऑप्शन के बिल्कुल बाहर रखे हैं गेंद को, वाइड के इशारा भी दिया गया है। रोमिंग और देशी के बीच में लड़ाई हुए थे, और इस लड़ाई में जो वाइड के रूप में फेंका गया, काफी लंबे दूर फेंका गए थे। उन्हीं कृष्ण ने ऑप्शन के काफी बाहर रखा गए थे, वाइड के इशारा दिया गया, 2 रन अतिरिक्त के खाते पर जोड़ा गया। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। अगले गेंद उन्हीं कृष्णन, और इनके सामने है ओ हो बढ़िया गेंद
शमशीद पैवलिका ने इस गेंद को उठाकर खेलने के प्रयास किए। लगातार शमशीद पैवलिका ने इस प्रतियोगिता में, इस मैच में 2-3 बार डॉट हुए, एकमात्र डबल हासिल किए, बाकी सभी सिंगल हासिल करते। इन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, स्ट्राइक रोटेट बहुत अच्छे किया भी है। अब अगली गेंद उन्नी कृष्णन, और इनके सामने बहुत खूबसूरत शॉट मिड ऑन पर खेला गया है। फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन। अब तक उन्नी कृष्णन ने 3 गेंदें फेंक चुके हैं, 4 रन खर्च किया गया है इस ओवर में, और इनके खाते पर 3 रन खर्च किया गया, 1 बाई थे और 1 वाइड थे, 2 सिंगल थे। अगली गेंद उन्नी, और उन्नी कृष्णन के गेंद में खेला गया है मिड ऑन पर, वही इलाके पर खेला गया। 70 बिली पदावते, इन्होंने गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, उठाए तो रोके, तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन, यानी 22 रन। अगली गेंद उन्नी कृष्णन, शमशीद बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला गया है, 1 रन, और एक बार 70 बिली पदाव के पास जा रही है। लगातार आखिरी 3 गेंद भी एक ही खिलाड़ी के तरफ खेला गया। एक लेफ्ट हैंडर है, ऑन साइड में खेल रही है, और जो एक बार जो गोरी के रियाज को मिले थे, इन्होंने ऑफ साइड में खेला गया। और इस गेंद को बहुत खूबसूरत चमत्कार शॉट, फील्डर मौजूद थे, इन्होंने हल्के से फील्ड किए, दूसरे रन के लिए यहां पर कोशिश किए, और इसी के साथ शमशीद पैवलिका आउट। और रियाज गोरी काफी निराश है, क्योंकि शमशीद को डांट रही है, क्यों अवश्य थे, ये रन दौड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों दौड़े, ये पूछ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सेट हुए थे दोनों बल्लेबाज। अभी जो विकेट पतन हुए तो जो नौजवान खिलाड़ी ने गलती की और उसने आउट हुए। नए खिलाड़ी मैदान पर आया हुए हैं, हरीश सुरमबैल सबसे महान खिलाड़ी है, जो अंडरआर्म दुनिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, इनको योगदान मिले हैं, तब गेंदबाजी में परिवर्तन लाए हैं। जो प्रवीण को लाएंगे गेंदबाजी के मोर्चा संभालने के लिए, अमेगोज यूनाइटेड के लिए जो आइकॉन खिलाड़ी के रूप में खेल रही है, प्रवीण को लाया गया है पहले गेंद। और इस गेंद बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल लेग ब्रेक थे इस गेंद को, जो अपनी अनुभव बहुत सारे हैं इनके पास। अब दोनों रोमिंग खिलाड़ी के बीच में लड़ाई जा रही है। प्रवीण है एक तरफ, दूसरी तरफ रियाज गोरी है, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए जो खिलाड़ी हैं दक्षिण कन्नड़ा के। और इस गेंद को उठा करके ला है, हवा पर गेंद थी और कोई फील्डर मौजूद नहीं थी। 2 तप्पे खाने के बाद जो फील्डर ने आए गेंद को उठाए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन। अब अगली गेंद प्रवीण ओवर द विकेट, ओ हो ऑप्शन के बाहर थी, वाइड के करार दिया जा रही है। इस इनिंग्स में दूसरी बार जो उदय कुमार को एक्सरसाइज करने के लिए मौका मिला है। और अब अगली गेंद, और हरीश इस गेंद को खिलाई के उपयोगी है, यहाँ पर फील्डर थे, इनके हाथ से जो फिसल गए थे गेंद, 1 रन जोड़ा गया, और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन। चौथी ओवर की प्रगति जा रही है। और इस बीच में जो नौशाद बुराक उपला कमेंटेटर को जो स्वागत करना चाहता हूं, उपला इलाके के बहुत मशहूर अंग्रेजी कमेंटेटर हैं, इनको स्विस प्रीमियर लीग के लिए तीसरी दिन के लिए स्वागत करना चाहता हूं। और एक बार अंपायर ने घूमकर देख रही है, तीसरी बार जो इनको मौका मिले हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए, यानी वाइड के इशारा देने के लिए वाइड के इशारा दिया गया। अगली गेंद प्रवीण टू रियाज गोरी, ओहो बढ़िया गेंद प्रवीण, रोमिंग टू रोमिंग, दोनों रोमिंग प्लेयर हैं, यानी खिलाड़ी दोनों कर्नाटक के हैं, दोनों के बीच में लड़ाई जा रही है तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगली गेंद, और इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑप्शन के बिल्कुल बाहर थे, तप्पा खाने के बाद विकेट कीपर ने मेरे ख्याल में छोड़ दिया गया। जी हाँ, विकेट कीपर ने गलती की, इस गलती के परिणाम है जो 1 रन, और इस 1 रन के मदद से है रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन, 31 द बोर्ड। आखिरी गेंद है, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी किया गया प्रवीण ने। अगली गेंद, हरीश उल्टा बल्ले में खेलना चाहते थे, और इसी के साथ ये आउट। 4 ओवर की समाप्त हुए, 30 रन और 2 विकेट। उन्नी कृष्णन वापस आए, ओ बढ़िया गेंद, ऑप्शन के बिल्कुल बाहर थे, वाइड के इशारा पहले किया गया है चंद्रा ने, और 2 रन यहाँ पर लॉटरी रन के रूप में यहाँ पर मिल जाएगी। जी हाँ, लॉटरी रन के रूप में, यानी अतिरिक्त के खाते पर 2 रन। 2 बार भी जो उन्नी कृष्णन के सामने रियाज गोरी मिले थे, 2 बार भी जो वाइड फेंका गए थे। अब अगली गेंद उन्नी कृष्णन टू अभी, ये है बीसी रोड फ्लैटेड सिक्सर, और एक सिक्सर बीसी रोड के तरफ के, लेकिन केरला बीसी रोड नहीं, कर्नाटक बीसी रोड के तरफ।
अभी बीसी रोड ने अभी जो छक्का लगाए हैं, बहुत बढ़िया स्कोर कार्ड पर उछाल दिख रही है। 38 रन पर आए हैं, जो एकमात्र गेंद फेंक चुके हैं। पहली गेंद वाइड +1 थे और उसके बाद अभी बीसी रोड ने आते ही स्वागत किए छक्का लगाकर। अब उन्नी कृष्णन के सामने अगली गेंद, और इस गेंद में खेलना चाहते थे, जो गेंद गई ऑफ साइड पर, और यहाँ पर जो बल्ले के किनारा लगकर गए हैं उस वजह से कोई इशारा नहीं है। और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 39 रन। अब उन्नी कृष्णन 5वें ओवर के प्रगति जा रही है। उन्नी कृष्णन अपनी कोटे की दूसरी ओवर फेंकना चाहते हैं। उन्नी कृष्णन अगली गेंद लेकर तैयार हैं अपनी कोटे की दूसरी ओवर। पहली ओवर बहुत चमत्कार गेंदबाजी किया गया थे, इन्होंने जो 7 रन खर्च किया गए थे, 7 नहीं जो 1 बाई थे, 6 रन इनके खाते पर जोड़ा जाएंगे। 6 रन खर्च किया गया था। अगली गेंद उन्नी कृष्णन, और इस गेंद में उठा कर खेला है, लंगों में जगह बनाए, बिल्कुल खाली मैदान, वहां पर फील्डर ने जाकर पहुंचते हुए दूसरी रन दौड़कर पूरा किया गया है। बहुत अच्छी फील्डिंग कहना होगा, बिल्कुल खाली मैदान पड़े थे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, 2 फील्डरों के बीचों बीच में गैप में खेला गए थे। रियाज गोरी को पहली बार मौका मिले उन्नी कृष्णन के सामने खेलने के लिए, और इस गेंद बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गोरी टू गोरी, गोरी यंग फ्रेंड्स गोरी यंग बॉयज, जी हाँ, गोरी यंग बॉयज टू गोरी यंग बॉयज। बहुत अच्छे खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई जा रही है। अब इस गेंद बहुत बढ़िया, हो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं उन्नी कृष्णन ने, बहुत जल्द वापस आए। पहली गेंद में छक्का लगा दिए थे, और उसके बाद जो अभी बीसी रोड ने स्ट्राइक रोटेट किया, और उसके बाद रियाज ने जो डबल हासिल किए, और इस गेंद आसानी के साथ खेला है, और गेंद के ऊपर शरीर और बल्ले को लेकर आए, अंतिम पैड पर टकराए, और इस वजह से 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 40 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। ऑन द बॉल 40 क्षमा कीजिए, सॉरी 42, क्षमा कीजिए रियाज जी, बोलती में गलती हो गई है यहाँ पर। 42 होता है, मामूली होना नहीं है, लेकिन ये दुनिया की कोने कोने में जो सुन रही है, माफ कीजिए। यहाँ पर 42 42 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट अब तक 2 विकेट नुकसान हुए। हरीश सुरम बैल गए हैं और शमशीद 2 अच्छे बल्लेबाज आउट हुए। अभी भी सिरोड़ आते ही छक्का लगा दिया गया। अब गेंदबाज नए गेंदबाज नासिर अरीमला को लेकर आए हैं, जो अरीमला इलाके के नए ट्रेंड है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, इनको लाए गए हैं गेंदबाजी के मोर्चा संभालने के लिए। आखिरी ओवर यानी डेथ ओवर कहा जाती है क्रिकेट में आखिरी ओवर को, यहाँ पर डेथ ओवर में क्या कर पाएंगे देखना बाकी है। आप नासिर अरीमला ये वक्त ही बताएंगे क्या कर पाएंगे। रियाज गोरी हैं, अभी भी सिरोड़ है। रियाज गोरी सेटल डाउन बैट्समैन, आप नासिर अरीमला के सामने एक लगातार चमत्कार छक्का भी लगा दिया गया थे इन्होंने लॉन्ग के ऊपर। अब पहली गेंद, ओ बढ़िया गेंद थे, लेकिन फील्डिंग खराब थे इनके, अपने हाथ पर सीधा भेजा गए थे रियाज गोरी ने। गेंद को इन्होंने जो चेक कर रही हैं वापस नासिर को दिया जा रही है। आप नासिर अगली गेंद लेकर तैयार हैं, इनके सामने है अभी भी सिरोड़। आप अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं। वो बादल छाया हुआ है बारिश के, यहाँ पर बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, और इस बार बहुत खूबसूरत गेंद छक्का खाए। हल्के से अपील भी किया गए थे नासिर अरीमला ने, लेकिन अंपायर ने जो इनकार किए। अब रियाज जो 2 स्ट्राइक पर पड़े हैं, इन्होंने ये चाहता होगा कि स्ट्राइक रोटेट करूं, जल्द से जल्द स्ट्राइक पर पहुंच जाऊं, पहुंच गया है तीसरी गेंद पर। अब 3 गेंद बच्चे हैं, रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन 44 रन, मेरे ख्याल में अच्छी स्कोर बन गए यहाँ पर। लेकिन मौसम बदल रही है, क्या होगा, तूफान आएगी ना बारिश आएंगी, ये नहीं जाने वक्त ही बताएंगे। अब अगली गेंद नासिर तो गोरी, ओ हो बढ़िया गेंद की खेला है मिड विकेट की तरफ, हल्के से चकमा गए, यह रनिंग बिटवीन द विकेट। नौशाद जी कल से देख रहा हूं कि आइकॉन प्लेयर पूरी तरह घोड़े की जैसा दौड़ रही है। कर्नाटक की सारे खिलाड़ी दौड़ने में बहुत तेज है, लेकिन केरला में दौड़ते हैं लेकिन उतने नहीं। मनोज दौड़ते हैं, जो प्रदीप दौड़ते हैं, नंदू कुंबला दौड़ते हैं, कार्तिक कुंबला दौड़ते हैं, गिरी कुंबला दौड़ते हैं, सारे कुंबला इलाके के। अब अगली गेंद बहुत खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग पर खेला गया है, वही फील्डर थे, यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, दूसरी रन। ओ हो रियाज
जोखिम उठाकर दौड़ रही है, क्योंकि इन्होंने जानता है कि आखिरी ओवर में कितना भी रन बटोर सकते हैं उतना बटोर सको। यहां पर रन संख्या कुल मिलाकर 48 रन, लाजवाब स्कोर बना। यहां पर बहुत ही खूबसूरत स्कोर बनाए। ग्लैडिएटर्स अंडरआर्म व्हाट्सएप ग्रुप के नाम है वर्ल्ड अंडरआर्म ग्रुप, और उस ग्रुप से जो इस टीम खरीदा गया है, ग्रुप के बहुत जन मिलकर आनी, और इस ग्रुप के एडमिन है जो अंडरआर्म क्रिकेट के लेजेंड फिरोज मंजेश्वर, और इन्होंने देखता होगा इस सीधा प्रसारण जो यूट्यूब में यहाँ पर खतरा हो सकती है। ये आउट, और इसी के साथ गोरी के खिलाड़ी, आरंभिक खिलाड़ी आखिरी गेंद में आउट। बहुत खूबसूरत खेल के प्रदर्शन किया है। मेरे ख्याल में नॉट आउट रहना था, क्योंकि और आने वाले मैच के लिए तो इनको आत्मविश्वास बढ़िया आते थे। यहाँ पर जो भी हो बहुत अच्छे रन बनाए। यहाँ पर रन संख्या अभी भी 49 इज द विक्ट्री टारगेट। यहाँ पर जो नासिर अरिमला को जितने भी तारीफ करूं उतना कम होगा, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किया गया है। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी के। और उस बीच में अगली मैच के लिए दावत देना चाहता हूं CSC पैवलिका BFC मंजेश्वर, दोनों टीम साइन अप के लिए आ जाइए। और यहाँ पर दूसरी इनिंग्स के लिए जाना होगा, और दूसरी इनिंग्स यहाँ पर 49 रन बनाना है। ग्लैडिएटर्स के सामने बहुत अच्छे बैटिंग लाइनअप भी है जो अमीगोज यूनाइटेड की, और क्या होंगे ये वक्त ही बताएंगे। उस बीच में CSC पैवलिका BFC मंजेश्वर जो साइन अप करना होगा अगली मैच के लिए। और इस प्रीमियर लीग आज के दिन में तीसरे दिन है, जो तीसरे दिन में जो 21वां मैच यहाँ पर खेला जा रही है। 2 दिन में 10 मैच यानी 20 मैच खत्म हुए थे। 21वां मैच है, आज के दिन में 11 मैच होना है। और 20 मैच में जो दुनिया की कोने कोने में यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब फेमस बेंगलुरु और नाम के जो सीधा प्रसारण दे रही है यूट्यूब में, बहुत बढ़िया है। और यूट्यूब में ये भाग्यशाली है जो विदेश में रहने वाले, यानी बाहर गांव में रहने वाली है। हमारी जो अंडरआर्म दुनिया से बाहर बढ़िया बढ़िया लेजेंड बाहर है। एक है, मैंने कहा था, फिरोज मंजेश्वर और नजीर चिरगोली नाम के खिलाड़ी है, और इन्होंने जो शामिल नहीं है। और शाफी पसोट है, यहाँ के शाफी है जो CSC पैवलिका की शाफी है, बाहर गाँव में है। और बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे खिलाड़ी, रहीम बेकूर जो बाहर गाँव में बैठकर खेल रही है। वरना अगर इन्होंने इन सब बाहर गांव में नहीं रहते तो यहां पर इस टूर्नामेंट में रह जाती थी। शम्मू अरिमला को मैंने याद किया था, इनके भाई खेल रही है नासिर अरिमला। उनके खुद के घर के अपनी सगे भाई के खेल देखने के लिए जो अवसर मिले हैं, इस अवसर बनाए हैं फेमस बेंगलुरु यानी यूट्यूब में जो सीधा प्रसारण दे रही है। आपको बिग सैल्यूट देना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया की कोने कोने में आप लोगों ने पहुंचा रही है। बढ़िया बढ़िया धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस बीच में दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हो रही है। नौशाद जी, आपको स्वागत करना चाहता हूं। तैयार हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। आज फिटनेस भी है इनको। कल के रात में कुछ सर दर्द थे, बीमार थे, उस वजह से कुछ जल्द वापस गए थे, आधा घंटे पहले घर लौटे थे। आज के दिन में इंशाअल्लाह आज 11 मैच होना है, 1:30-2 बजे तक हम यहाँ पर रहना है। और अब दूसरी इनिंग्स के लिए स्वागत करते हुए नौशाद बुराक ओपला, आज के दिन में पहली बार इनके आवाज।
So, okay, big thanks for Abdurrahman BSc Beko. Welcome everyone for the day number 3 here in the Swiss Premier League 2018 Underarm Gladiators on the failing side. Amigos United on the batting side, they are chasing the target of 49 runs from 6 over. Unikrishnan Kumbala and Sattar Ballipada started the innings for Amigos United. Quick couple of runs taken up by the batsman Unikrishnan, just pushing the ball towards the off-side ridge. There was some miscollection from the fielder. Meanwhile, batsman completing the couple of runs. So good way for the batsman like Unikrishnan to open the innings when they are chasing the target of 49 runs. They have to give a good start for their innings now. 2 runs came from the very first ball. Riaz Kunjattu, the master of underarm cricket in the Kasaragod district, comes in the middle to bowl the very first over and deliver the first one towards the offside reach. And here comes the second one to Unikrishnan. Looking for the reverse shot. Big appeal. Confidential one from the bowler, but wicketkeeper Riaz Gori was not confident. Ball was going far away from the leg stick. One in the form of leg bites added up here. So we can see in the very first day of the particular Swiss Premier League 2018, there was 11 sixes from 10 matches. And something changed in the ground condition we seen in the day number 2. So many maximums we seen in the previous night. Riaz Gori, Naufal Gori. We seen so many reverse shot sixes. Naufal Jodagal hit the 6. Mansoor. So many players. Arshad, Suhail Karkala. Everyone batted well in the day number 2. That showed so many maximums in the sixing list here. So let's wait the present condition. Isaac Machambari to scored up 2 big shots. That was across 6s, 3 6s. This time celebration from the bowler and umpiring the finger. Wicket number 1 down. Sattar Ballipada, the screamer of underarm cricket, walks back to the pavilion. Disappointment for Amigos United. They started well with a couple of runs, single in the form of leg bites, and finally Sattar Ballipada walks back to the pavilion in the form of clean bowled. It's been so long that I haven't seen you.
So, okay, welcome back to Swiss Premier League 2018 of the short break for the Azan. Here comes the new batsman, Praveen, icon player from side of Amigos United, right-handed batsman. So, all the icon players from Mangalore showed their talent so far in the Swiss Premier League 2018. So, Amigos United may be waiting for the good performance of the batsman like Praveen, who came at number 3 after losing the wicket of Satta Bellipada. This time, Riaz Kunjatur delivers towards the wide region. So, that's not a good start for the bowler to the new batsman Praveen, the icon player. We can see in the batting card for side of Amigos United, 3 balls completed from the bowler, 4 runs considered and got a wicket. Here comes the ball number 4 over the wicket to Praveen. Slower delivery this time, rolling one, nicely rolled towards the off region, no mistake behind the stick. We can see the quality wicket keeper Riaz Gori standing very close to the stakes and collects the ball coming from Riaz Kunjatur. Here comes the bowler again with the ball number 5. Something loosey, pitchy, this time celebration again. Gladiators are attacking the batsman's wicket number 2 down. The icon player makes a mistake back to back for his team. That is a big headache. We can see something disappointment in the face of Unni Krishnan Kumbala. They are hoping something good performance from the player like Praveen. But yeah, Praveen fails again. This is the 3rd match for Amigos United. They lose the first 2 matches in the group stages. They have to get the victory here to stay alive in the Swiss Premier League 2018. They have to open the points table. Unni Krishnan Kumbala is not happy at the other end. We can see Satta Bellipada depart in the form of clean bowl. Now the one down batsman Praveen departed in the form of clean bowl. Both the batsmen walking back and sitting in the dugout without scoring a single run. It means 2 golden ducks we can see in the batting card here. 5 balls completed, 4 for the loss of 2 wickets. So in number 4 we can see Ashik Koppala joining with Unni Krishnan Kumbala. 2 Kerala players gathered finally for Amigos United. They have to get a good partnership. Good start from the bowling side. We can see Riaz Kunjatur rolling one, nicely drives this time into the covers region. Quality fielder Azhar makes no mistake. Over number 1 comfortably completed for the fielding side. Scorecard is 5 for the loss of 2 wickets. But the strength I have is washing away. Won't be long before I get you by my side. So this is the very first match of day number 3 in the Swiss Premier League 2018. We are going to enjoy 2 more days to know the champions of Swiss Trophy 2018. I request the players from side of CSC PAIVALIKE, BFC Manjeshwar, please finish your sign-up process immediately. So this is the first over completed here. Before the end of the 3rd over, you have to finish the sign-up process to play up the upcoming match. So after completion of the comfortable over, your captain brings Riaz Gori in the middle to bowl the second over. Nicely played this time, ball moving into the mid-off region into the hands of the captain Riaz Kunjatur. Ashik Koppala just rotating the strike, sending the partner Unni Krishnan Kumbala. He may be having the experience of facing such a bowlers from Mangalore. So good thinking we can see from Ashik Manjeshwar, just rotating the strike in the very first ball. Unni Krishnan strikes Maria. This time ball moving to the widest long off region. Shamsid PAIVALIKE collects after bouncing in the ground. And one more single taken up there. Riaz Gori is not happy. He was just saying the fielder go for the catch. We have to get another wicket to put some pressure for the batting side. Already 2 top order batsmen are sitting back in the dugout. Here comes Riaz Gori again. Rolling one, cuts towards the short 3rd man position. Riaz Osangari makes no mistake there. One more single taken. And that single makes scorecard 8 runs on the board. 3 consecutive singles taken in the over number 2. Still we can see Unni Krishnan Kumbala. That will be the big hope in front of Amigos United. This time looking for the reverse shot completely. 10 runs on the board. Really good piece of bowling performance we can see from Andram Gladiators team leading under the captaincy of Riaz Kunjatur. Here comes the final one. Slower delivery and that is end. And Riaz Gori finishing is over perfectly. 2 overs completed up here. 10 for the loss of 2 wickets. So 5 runs came from the second over, 5 runs came from the first over. Riaz partners made perfectly in the bowling card. Still lot more work have to be done by the batsmen of Amigos United. They are chasing the target of 49 runs. It means they need 39 runs from remaining 24 balls. 4 overs remaining up here. We can see big round up in the fielding side. Who will take the responsibility to bowl the 3rd over? So Shamsid PAIVALIKE is moving into the bowling mark. So captain is very much
confident of the bowler like Shamsid PAIVALIKE because he is playing in the home ground. CSC PAIVALIKE and player playing for Andhra Gladiators in the particular Swiss Premier League 2018. He may be knowing some idea techniques of the particular stadium, PAIVALIKE stadium. Entire change we can see in the each and every day matches in the very first day one of Swiss Premier League 2018. That was very much favor for the bowlers. We've seen just 11 sixes. It may be the record in the Andhra cricket. Just 11 sixes from 10 matches. That was the story of the day number 1. In the previous day number 2, entire change in the ground condition, the pitch condition, everything changed. It was favor for the batsman. Chasing was a little bit easier here in the day number 2. We can't know anything about the day number 3 because this is the first match going on here. 48 runs set by the team batting first team like Andhra Gladiators. We can see excellent innings from Riaz Gori, who scored 17 runs, which consisted of 1 maximum, and so many couples from 18 balls. Shamsid PAIVALIKE was a good partner and he missed his wicket in the form of run out. That was a big misunderstanding between the wicket. After that, Aris Surambail joined. He departed in the form of clean ball when he was trying for the reverse shot. After that, Abi BC Road started the innings perfectly with a sixer and it not got any boundaries there. And he was coming at the end of the innings. That made him to play just 4 balls and scored 8 runs. That was a good contribution at the end from the player like Abi Bisiro. That made team total 48 runs. 49 was victory target. In reply, we can see Unnikrishna Kumbla came with the confident player Satta Billy Padav to attack the bowlers at the beginning of the innings, but Riaz Kunjattu started the over with a couple of runs, and we can see wicket in the third delivery. Sattar Billy Padav departed in the form of clean ball. Soon after that, Praveen Mangalore comes in the middle to play at number 3 as the one-down batsman. So he loses his wicket in the form of clean bowled. Now Ashik Koppala and Unnikrishna Kumbala, that is the batting combination. We can see for Amigos United, they have to build a good partnership here along with, they have to get the boundaries in each and every over. 39 runs from limited 4 overs, 24 balls are remaining here. So Shamsid PAIVALIKE comes in the middle to bowl. The third over is ready in the bowling mark. So now 8-run partnership between Unnikrishna Kumbala, that is the third wicket partnership going on here. They have to get more than 20 runs to put the team on the victory side. Here comes Shamsid around the wicket. Rolling one, strikes Maria. This time ball moving into the leg. Rich and miscollection from the bowler. Wicket keeper is not happy. Riaz Gori, the experienced Andhra cricketer, knows the value of each and every runs in the Andhra matches. In the cricket matches, that is a valuable one. Each and every run. So bowlers, fielders have to work hard to get the team into the winning side. Now Shamsid PAIVALIKE just allowing the ball to move into the mid-on region. That makes batsman to cross for the single. Here comes the PAIVALIKE and bowler second time. Rolling one, nicely delivered this time, ball moving into the fine leg region, and line got wrong. So Mustafa PAIVALIKE makes no mistake behind the wicket keeper, but here umpire says bowler was delivering towards the wide region, and that is another extra. That extra makes 13 runs on the board. So Riaz Kunjatur and Riaz Gori started perfectly the bowling card. Shamsid PAIVALIKE how to work hard, how to bowl the good line here. This time nicely played, ball moving into the square leg region. Fielder Aris Surambail collects it comfortably. One more single taken. The Unnikrishna is trying to set on the crease. So if the batsmen are trying to set on the crease till the 3 overs, we seen the match at day number 1. The batsmen like Chemio Sangadi and Zakir Manglo, they was trying to set for the first 3 overs. After that, they charged the bowlers and got a score of 52 runs from limited 6 over. Excellent batting performance we seen from Zakir Mangalore and Chemio Sangadi. That was a partnership here. Here comes Shamsid PAIVALIKE again. Looking for the reverse shot, clearly done, but batsmen have to satisfied with single. Connection between the bat and ball was not perfect. What Ashik was trying to hit, he was trying to hit the reverse shot towards the gully region, but ball moving into the covers, and one more single taken there. Here comes Shamsid PAIVALIKE. Ball number 4, rolling one, looking for the big shot towards the offside region. Miscollection behind the stick. One in the form of bye. That was the wicket keeper's mistake. Riaz Gori just allowing the batsman to cross for the single. One in the form of byes. Here 4 balls completed from Shamsid PAIVALIKE. No boundaries we've seen so far in the innings of Amigos United. They are struggling in front of the bowlers. That's a big picture we can see in front of us playing here in the PAIVALIKE stadium. Rolling one, Cats
Plays nicely towards the long on region. RBBC road camps and collects one more single taken there. So singles are 5 consecutive singles taken up here. 17 runs on the board. So here comes our final one, Shamsid to Unikrishnan. Rolling one, nicely played this time, ball straight drive from the batsman, and RBB0 the protector there. One more single, so 6 singles in an over. Over number 3 comes to an end, scorecard remains on 18 for the loss of 2 wickets. So 3 overs completed here, 18 runs. That means they got the run rate of just 6 runs per over. Now they have to get 10.3 per over, 31 runs more needed from remaining 3 overs. Riyad Kunjatu coming into the attack to bowl the 4th over of the innings. So we are having 3 Riyaz playing for Andram Gladiators. That is a good scene we can see from Andram Gladiators. We have Riyaz Kunjatu, the master of Andram cricket from Kerala. Riyaz Gori, the experienced man from Karnataka, and Riyaz Osangadi, one of the toppest in the commentator in the Andram crickets, joining the single team Andram Gladiators. So now 18 runs came from 18 balls, something discussion going between the official umpires. So Riyaz Kunjatur is ready to deliver the 4th over. He is standing in the bowling mark. Something discussion going between the official main umpire as well as the organizer. There is something about the ball. I think Schlesinger ball is used up here. We can't say anything about the particular ball which is using here in the Swiss Premier League 2088. It will be favor for the batsman sometime. It will be the favor for the bowler sometime. Here comes Riyaz Kunjatur with over number 4. Nicely played into the hands of the bowler. And Big Appeal, confidential one. So something going between Riyaz Gori and Riyaz Kunjatur. Fielders are not interested for the appeal. Umpire says there was something bump from the batsman. Ball hit the ground before landing on the bowler's area. So Riyaz Kunjatur going for the appeal when keeper was going for the appeal there. Yeah, the over number 4 started perfectly from Riyaz Kunjatur. Here comes second time over the wicket to Unikrishnan Kumbala. So rolling one, nicely delivered this time, play towards the hands of Azru Bichu boys, and he fails to throw there. There was something danger for the batsman like Unikrishnan Kumbala. Single taken from the second delivery of the 4th over, and bats are broken up here. Unikrishnan Kumbala how to change his bat, is moving to the dugout. So ball hitting the ground, bat hitting the ground. Riyaz Kunjatur was bowling the rolling delivery unit, trying for the drive shot towards the offside region. There was a good collection from the fielder like Azru, but Unikrishnan how to change his bat. That is the rare scene we can see in the cricket matches. Batsman getting the broken bat here. Unikrishnan coming with the new bat. Let's wait and see what the new bat will tell against the bowlers. He is moving into the non-strike position. 2 balls completed up here from Riyaz Kunjatur. 19 runs on the board. Here comes Riyaz Kunjatur with the ball number 3 to Ashikopola. Rolling one, this time ball moving into the fine leg region. One in the form of leg buys. Mustafa CSE makes no mistake. We can find the single fielders gathered behind the wicket keeper. That shows the quality of the fielder like Mustafa, the experienced Andram cricketer. So Riyaz Kunjatur ready to deliver. Unikrishnan, who is having the new bat in his hand, this time into the leg stick region, and that is a wide delivery. Riyaz Kunjatur fails to bowl the good one, and that extra makes something changes up here. Scorecard is moving to 21. So here comes Riyaz again. Unikrishnan, this time miscalculation from the bowler. They are running for single. For I request the captain from side of CSC PAIVALIKE, BFC Manjeshwar, please report here for the tossing ceremony of the match number 2. So 4 balls completed, 2 more deliveries yet to come. Excellent bowling performance we can see from all the bowlers. Riyaz Kunjatur, Riyaz Gori, Shamsid PAIVALIKE. Again Riyaz is bowling the 4th over. 4 balls completed. Here comes the ball number 5. Rolling one. This time they are running for single. Miscollection, lazy collection behind the stick, and that is the wide.
So extras will make something trouble for the fielders. Now fielding side scorecard is 24. 5 balls completed up here. 25 runs. 4 balls completed. 2 more deliveries yet to come make a part. Still Unnikrishnan Kumbala, the opener, is with the bat there. That is the really big hope for Amigos United. Captain of CSC PAIVALIKE, BFC Manjesho, please report here immediately. So here comes Riyaz Kunjatur looking for the reverse shot. Ball was moving towards the offside region. He was not able to contact ball with the bat. The big man in the underarm cricket, Unnikrishnan Kumbala, is failing against the master of underarm cricket, Riyaz Kunjatur, having lots of experience. He knows to bowl, knowing the mentality of the batsman. Here comes Riyaz again. And nicely played, drives into the answer of Azrabichi voice. He fumbles there. Unnikrishnan Kumbala is not interested with single. Here over number 4 comes to an end. Scorecard remains on 24 runs on the board. So 25 needed from 12 balls. So here we can find the bowling card of underarm Gladiators. Riyaz Kunjatur bowled 2 over, considered 11 runs and got 2 wickets. And Riyaz Gori bowled a single over and he considered 5 runs and no wickets. Shamsid PAIVALIKE 25 needed from 12 balls. So 25 runs needed from 12 balls. That means they have to get 12.5. That is required run rate in front of the batsmen. It means they have to charge the bowlers. Unnikrishnan is well set on the crease. He came as the opener playing in the 5th over. So now he have to charge the bowlers to get a victory for Amigos United. They are playing the 3rd matches. They have to open the points table. Here comes Tapi Bekur around the wicket. Pitching delivery this time. Ball moving towards the outside region. That was a wide delivery to start from the bowler number 4, who is bowling the over number 5. So we can see a cool climate here. It is very much suitable for the cricketers to play the cricket match. Here comes Tapi. Rolling one, big shot towards the deep region, 1 bounce, an excellent collection from the fielder. They are just satisfying with single. We can see big shout from the dugout. They have to get the couple of runs, but Unnikrishnan Kumbala, Ashik Manjeshwar, the batsman who is playing for Amigos United, satisfied with single. That single makes scorecard 26. Now 23 needed from 11 balls. Here comes Tapi Bekur around the wicket. Second time in this action to Unnikrishnan Kumbala. Rolling one, nicely played this time. Almost that was a straight drive from the batsman into the hands of Habibi Siro. He fumbles there. Second fumble from the fielder, but the batsman is not interested for the second run. He is just satisfying with single. I request the captain of CSC PAIVALIKE, BFC Manjeshwar. So this is the 3rd call for you. Please report here immediately for the tossing ceremony. So Badru Pasod is waiting here. CSC PAIVALIKE and captain. So 2 balls completed. Tapi Bekur started with a wide delivery soon after that. He knows the wide will make something trouble, so he's bringing the good line. 2 consecutive singles taken here. Here comes the ball number 3 around the wicket to Ashik Manjeshwar. Rolling one, this time nicely played. Ball moving to the mid of range. Shamsid PAIVALIKE, excellent collection. Super piece of batting, man standing inside 30-yard circle, but bowler fails to break the stump. That makes batsman to satisfy here. 3 balls completed, 4 runs considered by the bowler. Tapi Bekur is bowling the crucial over. So Abdurrahman BSC Bekur was always mentioning the 5th over and 6th over would be the crucial over in the interim cricket matches when they are bowling the second innings. Now Tapi Bekur keeping the pressure away, bowling perfectly. Here comes the ball number 4 around the wicket to Unnikrishnan Kumbala. Pitching one, look at the big shot this time. Up in the Azrobichi voice, and he never makes a mistake.
finally, Unnikrishnan Kumbala walks back to the pavilion. The big hope for Amigos United fades up here. The captain walking back to the pavilion in the form of KASARAGOD. So after the completion of 4.4 overs, scorecard is 28 runs for the loss of 3 wickets. So we have the information from the tossing point. BFC Manjeshwar on the toss and they elected to field first. That will be the match number 2. So here Tapi Bekor is doing his job perfectly. Here comes the ball number 5. Rolling one, nicely delivered this time. That was a good line. Ashi Koppala fails in front of Tapi Bekor. So after losing the wicket of Unnikrishnan Kumbala, Samat Talekala comes with the bat and standing on the non-strike. Rohit pinch it up of the interim cricket. So 5 balls completed. So final one from Tapi Bekor. Excellent bowling. We can see from Tapi Bekor just 4 runs considered from 5 balls. Here comes the final one. Nicely delivered. Over number 5 comes to an end. Scorecard is 28 runs for the loss of 3 wickets. 21 runs needed from remaining 6 balls. Top class bowling we can see from Tapi Bekor. Just considered 4 runs and got a wicket. So quality players we are having from the club like BSC Bekor in the interim crickets. We have Abdurrahman BSC Bekor, we can say the coach who is bringing up the new trend, new players into the interim cricket just to show some talent. We can see good performers gathered for so many teams in the Swiss Premier League 2018. Excellent bowling performance we seen from Tapi Bekor, who was playing for Azad Various Kadambar in the previous tournament that was held up in the Managuji Mini Stadium, MPL 2018. Tapi Bekor was in the runners team, and that made Riaz Kunjatu to bring up the bowler like Tapi Bekor in the auction and keeping him in his team and giving the 5th over. That was a crucial over. Tapi Bekor is doing the job perfectly. So 5 overs completed here, 28 runs on the board. Now 21 runs needed from remaining 6 balls. In the previous day, 17 runs got in the final over. The batsman like Asif Papila scored here. Ari Surambail with the very first one. Rolling deliver this time. Nicely did. That was a clean ball. Wicket number 4 down. Samat Talekala walks back to the pavilion in the form of clean ball. Excellent start from the final over. Ari Surambail sending the new batsman back to the dugout. So Amigos United is failing again. That is the scene we can see in the Swiss Premier League 2018. Now after losing the wicket of Samat Talekala, here comes Nasir Arimala pitching. Well, look at the big shot this time up in the air and all the way to the crowds. Good start from the new batsman. Much needed maximum here. Something disappointment we can see in the fielders. Captain, wicket keeper, everyone is struck there. Nasir Arimala comes with the bat at number 6. 15 needed from 4 balls. Here comes Ari Surambail. So another big shot will change entire moment of the cricket match. Pitching one. This time completely missed. No man to protect behind the wicket keeper. They are running for the second run. Umpire indicates 2 in the form of byes. Keeper's mistake here. 3 balls completed. Scorecard is jumping to 36. So 13 runs needed from remaining 3 balls. Here comes Surambail Ari. Full toss delivery. He is playing down the track. That was a full toss delivery coming from Ari Surambail. Nasir Arimala was failing to take the advantage to send the ball towards the crowds. That was a good advantage for the batsman. 12 needed from 2 balls. So 2 big shots. Kian Ashik makes something for Amigos United.
So BC Road is rushing to the bowling mark, just guiding something to Aris Surambail. Ashik Kopala is the batsman. Can he be the hero by hitting 2-2? Here comes Surambail. Nicely played, drives into the wideish long region between the gaps. That is the boundary from the batsman. So I think the batsmen are very much late to charge the bowlers. So if they had started perfectly without losing the wicket, they can get a victory here. But now Nasir Arimala and Ashik Manjeshwar is charging the bowler in the final over. So 8 runs needed from final one delivery. Aris Surambail here comes with the final ball. Rolling one this time. Good line from the bowler. That is the end of the match number 1 in the day number 3. Wicket. So Ashik Kopala is departed in the final, delivered 1 more wicket down for Amigos United, and that is the 3rd loss for Amigos United. And Andram Gladiators gets another victory points on the points table. Really quality piece of batting performance we seen from Riyaz Gori, Shamsid PAIVALIKE, BC Road. In reply, we can see the bowling performance. Riyaz Kunjatur bowled 2 over, considered 11 runs. Riyaz Gori bowled 1 over, considered 5 runs. Riyaz Kunjatur got 2 wickets. Shamsid PAIVALIKE bowled single over, considered 7 runs. Tappi Beko, that was the crucial over of the match. He just considered 4 runs and got a wicket in his over. And finally, Aris Surambail, we had, that was an expensive over. Anyway, no matter for the result of the particular match, Andram Gladiators got the victory. He considered 13 runs and got 2 wickets. So he sent the batsmen like Samat Alekala as well as Ashik Kopala in the final delivery. That made something for Andram Gladiators. So that is the result from the day number 3. First match completed here. Match number 2, CSC PAIVALIKE takes on BFC Manjeshwar. After spinning the coin, BFC Manjeshwar won the toss and they elected to field first. Now it's time to announce the man of the match here. Abdurrahman BSC Bekur is ready to announce the hero of the first match. Riyaz Usangadi. Man of the match Vedileka. Man of the match Vedileka. Man of the match Vedilinte ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ അതിഥിയായി ക്രിസ്ത്യൻ പൈവലിക്ക എന്ന CSC പൈവലിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 28 കൊല്ലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൈദുള്ള എന്ന സൈദു അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. CSC പൈവലിക്കയെ പടുത്തുയർത്തുവാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ